Assalamualaikum grade 3. I hope that you all are fine. This is your English teacher and welcome to your English class. Kids, as you all know that we are reading Oliver Twist. We read first half of our third chapter, and inshallah today we will complete our third chapter, which is Oliver Walks to London. Kids, you have to read page number 17, 18 and 19 and 19 at home. I'm going to tell you the summary of these three pages. Before starting the summary, let us revise the previous lesson. Class, in our previous lesson, we read that Oliver went to London. Yes, right, and there he met a boy named the Artful Dodger who took Oliver to Mr. Fagin, who was a thief. Okay, the Artful Dodger told Oliver that we are going to work on an old man, and now we are going to start the summary, and let's see what will happen next. Chapter 3, Oliver Walks to London. Oliver followed the two boys. One of them was the Artful Dodger and the other one was Charlie Bates. They both were heading towards an old gentleman named Mr. Brownlow. He was reading a book and didn't notice them. The Artful Dodger put his hand into the old gentleman's pocket and pulled out a silk handkerchief. He gave it to the other boy, Charlie Bates, and then both boys ran away. Oliver now understood that their work was stealing. He began to run away too. The old gentleman noticed that he had lost his handkerchief, and when he turned around, he saw Oliver running. He shouted, "Stop, thief!" A big man caught Oliver and knocked him down. Then a policeman came and took Oliver to the police station. At that time, the Artful Dodger and Charlie Bates had run back home. The policeman took Oliver to the police magistrate's, Mr. Fang's room. Oliver was very frightened and couldn't speak anything. After searching, policemen did not find any handkerchief in Oliver's pockets, and Mr. Brownlow also spoke in favor of Oliver. Mr. Fang asked Oliver about it, but he did not answer. His face turned white and he fell down. Mr. Fang ordered to keep Oliver in the prison for 3 months. Then just a man ran in who was the owner of the bookshop where Mr. Brownlow was standing and reading a book. He saw everything what happened over there and told Mr. Fagin about the two boys. On asking, Mr. Fagin came to know that Mr. Brownlow was reading the book without paying for it. So he freed Oliver, saying, "Well, now you yourself took away a book without paying for it. How can you call this boy a thief?" Oliver was laying on the floor and he looked very ill. Mr. Brownlow took pity on Oliver and took him to his home in a carriage. So kids, what have we read? Let me summarize this in Urdu as well so you may understand better. किड्स, हमने ये पढ़ा कि ऑलिवर जो है उन टू बॉयज़ के साथ, उनका क्या नेम था, आर्टफुल डॉजर और चार्ली बेट्स, वो दोनों मिस्टर एक ओल्ड मैन के पास जाते हैं ओल्ड मैन का क्या नाम होता है, मिस्टर ब्राउनलो. ठीक है, उन आर्टफुल डॉजर क्या करता है, मिस्टर ब्राउनलो की पॉकेट से एक सिल्क का हैंकरचीफ यानी सिल्क का रुमाल निकालता है और वो चार्ली बेट्स को दे देता है और वो दोनों भाग जाते हैं. ऑलिवर ये देखता है और उसको पता चलता है कि हमारा काम तो चोरी करना है. ऑलिवर भी ये देख के भागने की कोशिश करता है, वो भागता है, लेकिन मिस्टर ब्राउनलो उसको देख लेते हैं और एक बड़ा सा आदमी ऑलिवर को पकड़ लेता है. जब मिस्टर ब्राउनलो शाउट करते हैं कि इसको पकड़ो, ये चोर है, फिर एक पुलिस वाला आता है और वो ऑलिवर को पुलिस स्टेशन ले जाता है. वहाँ पे एक पुलिस मजिस्ट्रेट यानी कि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर होता है, वो ऑलिवर को पनिशमेंट देता है कि इसको 3 मंथ्स के लिए चोरी की सज़ा दीजिए और ये 3 मंथ्स के लिए प्रिजन में रहेगा और बहुत ज़्यादा वहाँ पे उसे काम करवाया जाए. लेकिन मिस्टर ब्राउनलो को नहीं लगता कि ऑलिवर ने चोरी की हुई है. वो ऑलिवर के फेवर में भी बोलते हैं. ऑलिवर ये सब देख के बहुत डर जाता है और वो बेहोश हो जाता है. इतनी देर में एक आदमी भागता हुआ आता है और वो उस बुक शॉप का ओनर होता है जिसके बाहर जहाँ खड़े होके मिस्टर ब्राउनलो बुक पढ़ रहे थे.
वो बुक शॉप का ओनर जो होता है वो कहता है मैंने सब कुछ देखा है, ये जो लड़का है यानी कि ओलिवर, इसने कुछ नहीं किया। मैंने देखा है कि 2 और लड़के थे, उन्होंने चोरी किया, वो दोनों मिस्टर ब्राउनलो का सिल्क का हैंकरचीफ लेके भागे थे। मिस्टर फैंग जो कि सीनियर ऑफिसर होते हैं वो पूछते हैं कि वो क्या पूछते हैं, वो पूछते हैं कि क्या मिस्टर ब्राउनलो से पूछते हैं कि क्या आपने इस बुक के लिए जो आप पढ़ रहे थे आपने पे किया था, आपने पैसे दिए थे, जिससे उनको पता लगता है कि मिस्टर ब्राउनलो ने पे नहीं किया था, पैसे नहीं दिए थे, वो पैसे दिए बगैर ही बुक पढ़ रहे थे। तो वो जो मिस्टर फैंग है वो कहते हैं कि तुम या आप किस तरह इस लड़के को चोर कह सकते हैं जब आपने खुद ही बुक के पैसे नहीं दिए और आप बुक के लिए पे किए बगैर उसको यूज़ कर रहे हैं। सो ये कहते हुए वो ओलिवर को फ्री कर देते हैं, लेकिन ओलिवर बहुत ज़्यादा बीमार लगता है, वो ज़मीन पे बेहोश पड़ा हुआ होता है। तो मिस्टर ब्राउनलो को उसको देख के बहुत बुरा लगता है और वो जल्दी से ओलिवर को अपने घर ले जाते हैं एक कैरेज में। All right, so kids, I have explained this chapter in Urdu and in English as well. So now it's your duty to read this chapter at home and underline all the difficult words if you find any. You have to carefully read page number 17, 18 and 19 of your reader, and in this way we will inshallah you will inshallah complete the reading of chapter number 3, and in our next class we will do question answers and words meanings and repetition words of this chapter. So take care kids. Allah Hafiz.